You want me to do report writing or I should start with the new topic? Hello? Okay, we have completed report writing as you already know. So the next topic which we will do is summary writing. Okay, so what's summary writing? Summarization is known as summary writing. Okay. Now, whenever you are writing the summary of any passage, what points you need to keep in mind, that's important to understand. Okay. So, whenever we are writing summary, so what is summary or summarization? Summary means your summarization should be 1/3 of the original passage. Clear? Now suppose if your original passage is about 300 words. If original passage has 300 words, it means your summary will be, it means summary will be around 100 words. Now 100 words doesn't mean exactly 100 words. It can be between, if you write in 100 words exactly, it's really good. If you can't write, it can be 90 to 110, means 95 to 105, like 5 words here and there. Okay, words approximately. I hope it's clear to you. Okay. So whenever you are writing summary, you have to keep it in mind that it should be approximately 1/3 of the original passage. Now to write a summary, a good summary of any passage, what you are supposed to do. Okay. Tips or main points. First point is you have to read the passage carefully. Okay. Summarization actually means
Summarization actually means कुछ और करने के तो मैं तो बाहर से तो लेके आया देखता इसे करते क्या summarization actually means that your summary original passage should be brief of whatever is given. Read the passage carefully once or twice, or you can read 2 or 3 times. Read the passage carefully 2-3 times. Okay. When you read the passage for the first time, you only understand what is in the passage. Okay, what is the passage about? So you have to read the passage carefully 2 or 3 times if you don't understand what's given in the passage clearly. Okay. Then when you are doing it at home or for practice, you can underline the main ideas. Okay, but in exam, you are not supposed to do it. Okay, so your second point is underline the main ideas. Okay, or you can say note down the main ideas. Okay, in your notebook. In exam, when you are doing summary writing, you can use the last page of your answer book. Okay, for rough work, and there you can note down the main ideas. Okay, because in exam you are not supposed to use any mark or question paper. You are not supposed to do anything. Okay, write anything on the question paper and make any mark on the question paper, and note down or underline the main ideas. Now you have to see that there should be no repetition of ideas in the summary. Okay, so write down the main points or ideas of the passage in your own words. Okay. Next point, you should use simple language. Okay. Use simple sentences, simple language, easy language. And avoid, don't write quotations. Okay, when I say don't write quotation, it means you are not supposed to write quotations, but you can understand the quotation and can write those ideas which are mentioned in the quotation. Okay, don't write quotations, examples. Okay, all of you noted down this much. So you have to avoid examples, okay, quotations, repetition, and
So this is your fifth point, you can say, or the fourth point can be continued even. Negative expressions. Passive voice. Okay. So we are supposed to avoid all these things. Is it clear? Then you are supposed to use, because you have to write in short, now you have to make it 1/3. So you can make use of one word substitute. Okay. Now what is one word substitute? For example, I say one who looks after the patient. ठीक है, तो वन हु लुक्स आफ्टर द पेशेंट के लिए क्या एक वर्ड यूज करोगे आप? नर्स, है ना? सो for 6 words you have used one word nurse, and this is known as one word substitute. Clear? The place where books are kept for reading. So it's library. Okay. So this way you have to use one word substitute wherever possible. I hope it is clear up to this point. सबको समझ आया? What you have to do? You have to read the passage carefully 2 or 3 times. You have to note down or underline the main ideas. Then you have to write down the main ideas in your own words in simple language using simple sentence. You have to avoid examples, quotations, repetition, negative expression, passive voice as far as possible. Now, when I say don't write examples, don't write quotation, I mean to say don't write examples given in the passage, but whatever you understand from the examples, quotations, that can be included in your summary in your own words. Okay. So I hope things are clear to you. So how to avoid repetition? Suppose I say he is happy and cheerful. Where now in this sentence there is a repetition. Happy and cheerful are the same, correct? So you will either write he is happy, or you will write he is cheerful.
Here you will not use both. So if you delete, you see from 5 words you come to 3 words. So this way repetition is to be avoided. Okay. Now I say, please repeat this statement again. Please repeat this statement, तो ठीक है. If I say please repeat this statement again, तो ये sentence ही wrong हो जाता है, क्योंकि repeat means say. So you will say please say the statement again. Okay. Now if you just say please repeat, then also it's clear that whatever you have stated, the person is asking to repeat that. Clear? So this way you have to keep in mind that you will not repeat, you will avoid repetition. And now see, suppose there is a passage given where it is about that discipline in life or laziness. You have to avoid laziness, and then it gives you a story. Okay. And in that story, some examples are given, or through story itself is an example. So you will not write that story or that example, but whatever you understand from that story. For example, the hare and the tortoise का story आप सबने सुना रहेगा ना, that the hare or the rabbit was fast, but it stops in the middle of the way to take rest, and the tortoise, even after slow, reaches and wins the race. Okay. So suppose that statement, that story is given to tell you importance of discipline in life, continuity in life, and you will not write in summary that story, here and the tortoise or the rabbit and the tortoise, but you will, whatever you understand from the story, that you can include in the summary. So examples, similarly, examples are to be avoided, quotations are to be avoided, but whatever you understand from example and quotation can be included in the summary. Okay. So I hope it's clear to you. Now let me show you. Suppose I give you some sentences. Okay. And I say, write it. ठीक है. Now in this statement, please find and enclose a check of rupees 5,000 with this letter. कितना वर्ड्स हैं?
11 वर्ड्स हैं, ठीक है। अभी स्टेटमेंट को अगर हमें छोटा करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सपोज एनीबडी वुड लाइक टू टेल? सपोज इस स्टेटमेंट को छोटा करके लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी इसमें कितने वर्ड्स हैं? अगर इस चेक ऑफ रुपीज 5000 इज एनक्लोज्ड लिखते हैं तो ये और छोटा हो जाता है, ठीक है। बट विद दिस लेटर लिखते तो भी एक वर्ड कम होता है। तो वी हैव टू सिमिलरली वी हैव टू सी कि हाउ वी कैन डू। इट डजंट मीन कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स कम करने के लिए सेंटेंस गलत बनाओगे या नहीं। सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट आप उसमें एक कैसे आप उसको शॉर्ट करोगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। किसी स्टूडेंट ने एलोक्यूशन कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया है स्पीकर्स फोरम के? हेलो, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉट द नोटिस ना, स्पीकर्स फोरम एंड स्टाफ एकेडमी का। हेलो, किसी स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है? नहीं मिस। नहीं किया है, क्यों? हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी लैंग्वेज में बोलना नहीं आता है? टॉपिक्स अच्छे नहीं है जिस पे बोल सकते हो? ऑनलाइन बोलना है इसलिए नहीं किया है रजिस्टर। प्रणव, गौतम, काजल, तबस्सुम, किसी का इंटरेस्ट नहीं है? What should be done to create your interest? कल लास्ट डेट है, रजिस्टर करो। ओके, सो समरी राइटिंग के लिए आपको क्या मेन ध्यान में रखना है कि whenever you are reading any passage, how you will summarize that। तो आप उसमें मेन आइडियाज को अंडरलाइन करोगे। मेन आइडियाज को अंडरलाइन करने के बाद आप ये देखोगे कि आप कोई then you will prepare rough draft of your summary, ठीक है।
आप क्या करोगे जब आप इतना सब करते हो ना, मेन आइडियाज लिखते हो, रफ ड्राफ्ट बनाते हो, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है? When you are writing your ideas in your own words in simple language, write for the first draft. फर्स्ट ड्राफ्ट में आप चेक करोगे whether all main ideas have been included. ठीक है, ठीक है। चेक फॉर ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स। ठीक है, चेक ग्रामर, लैंग्वेज, स्टाइल। So this is your suppose fifth or sixth point, whatever we were doing. Okay, so write the first draft, check all main ideas are included, check grammar, language, style. Okay, number of words even you have to see. मैंने बोला suppose original summary is of 300 words and then you are supposed to write, sorry, original passage is about 300 words, summary should be of 100 words, correct? So in that case, you will see when you are writing the first draft whether all main ideas are included, it's about 100 words or not. If it's more, suppose it's less than 90 and more than 110, then you will see if it's around 1/3 or not. One third of the original passage. If it is around 1/3 of the original passage, correct? If it's not 1/3 of the original passage, it's less than 1/3. You have to see whether anything important is left out. If anything important is left out, insert it. Okay. If more than 1/3, see anything is repeated, or unnecessary, delete that. क्लियर? तो आपको ये देखना है कि जब आप समरी लिख रहे हो उसमें रफ ड्राफ्ट में आपने सब मेन आइडियाज इंक्लूड किए हैं या नहीं किए हैं, ग्रामर, लैंग्वेज, स्टाइल ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, पंक्चुएशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही है, आपके सब आइडियाज इंक्लूड हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर आपकी समरी ओरिजिनल पैसेज के 1/3 से बहुत कम है तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आइडियाज आपने और लिख सकते थे उसमें, जो आपने छोड़ दिए हैं तो आप उसको लिखो। अगर आपको ये लगता है कि आपकी समरी बड़ी है, 100 से 110 से ज्यादा है, 1/3 से ज्यादा है, तो आप फिर उसमें ये देखोगे कि आपको क्या डिलीट करना है, क्या आपने रिपीट किया है, क्या अननेसेसरी है, कोई एग्जाम्पल, कोटेशन,
तो आपने नहीं लिख दिया है. ओके, so then you will again write the second draft. Check it. And finalize. Editing and proofreading. Is it clear? जो आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा वो आपका रीराइट इट, थर्ड ड्राफ्ट जो होगा समरी इज रेडी. Is it clear? So you can't write your summary in the first draft itself. अगर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो बात अलग है, नहीं तो आप फर्स्ट ड्राफ्ट में समरी नहीं लिख सकते हो. That you have to keep in mind. As I am practicing it since long, तो मैं फर्स्ट ड्राफ्ट में भी लिख लेती हूँ, बट फिर भी मुझे चेक करना पड़ता है. Okay, so you have to keep all these things in mind while preparing. Okay, summary. I hope things are clear to you. सबको समझ आ रही है? सबने नोट कर लिए ये पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं? यस मैम. हाँ, किसी को कुछ पूछना है समरी राइटिंग के बारे में? नहीं पूछना है, ठीक है. सबको सब कुछ आता है ऐसा सोच के चलती हूँ मैं. अभी मैंने आपको गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी सब कुछ भेजा हुआ है, समरी राइटिंग भी भेजा हुआ है. लेट अस सी. ये जो आपका गूगल क्लासरूम है बीसी का है ये, ठीक है. ये देखो आपको समरी राइटिंग पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना? इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है. व्हाट इज द समरी? द वर्ड समरी डिफाइंड बाय द OALD, Oxford Advanced Learners Dictionary, as a short statement that gives only the main points of something, not the details. इसलिए आपको एग्जाम्पल्स नहीं देने हैं, कोटेशंस नहीं देनी है, ठीक है. और रिपीटिशन भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेन पॉइंट्स बताने, आपको डिटेल नहीं बताए. इट मीन्स अ शॉर्ट सिनॉप्सिस और आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइडियाज एंड points of the passage. The summary should read like a piece of continuous writing with a sequential arrangement of ideas expressed in it and a clear reflection of the main and sub points. मैम Yes. गूगल क्लासरूम की लिंक सेंड करेंगे आप अपने बीसी के, क्योंकि मेरे पास नहीं है. अरे बट गूगल क्लासरूम की लिंक ऑलरेडी मैंने सेंड की है तुम्हें ग्रुप में. मैम इंग्लिश लिटरेचर के ग्रुप में. इंग्लिश लिटरेचर के ग्रुप में क्यों सेंड करूंगी? SYBAB डिवीजन के ग्रुप में सेंड किया था मैंने. अच्छा ठीक है मैम, चेक करती हूँ मैं बताऊं कब मैंने भेजा है आपको लिंक? मैंने आपको भेजा है गूगल क्लासरूम का लिंक 29
सितंबर के आसपास। ओके आप हो ना ग्रुप में, SYBA डिवीजन के ग्रुप में? एग्जाम कैसे दिया अगर ग्रुप में नहीं हो तो? Okay, so you have to see this, that you are not writing anything in detail. You have to write in main points, and so you should read, the summary should read like a piece of continuous writing. Whatever ideas you are expressing, there should be a connection in those ideas. Then only it will look like a continuous writing, with a sequential arrangement of ideas expressed in it and a clear reflection of the main points. It should, however, be borne in mind that the comments, opinions, and views of summary writer must be avoided at all cost. अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको अपनी तरफ से अपने विचार नहीं देने हैं. You have to write in your own words, but you are not supposed to give your opinion, your comment or your views on that passage. ठीक है? Summarizing text requires the ability to identify the main argument of the passage and to reproduce the points in one's own style of writing with a sound logical sequence. This skill is helpful in summarizing excessive information, lengthy reports, articles, and books. So, to isolate the fundamental ideas which are of significance without missing any points, it is easy to pick out the main argument in passage that are argumentative, analytical, or informative in nature. When the passages are lengthy and contain more than one paragraph, it would be a good idea to note down the topic sentence of each paragraph in one's own words. This will help in preparing the summary. Generally, the main argument is in the form of a general statement that is supported by example, data, numbers, figures, etc. तो आपको मेन आइडियाज ही लिखने हैं, आपको डेटा, नंबर, फिगर्स ये सब नहीं लिखने हैं. ठीक है? सो आई हैव गिवन कीपिंग मेन पॉइंट्स to keep in mind while writing a summary. Read the passage carefully first and note down the main argument being made. Note down the topic sentence for each paragraph if the passage consists of many paragraphs or the subpoints being made. Write out the first draft based on the key points that have been jotted down. Compare the draft with the original passage to check any omission, deletion, addition, irrelevance. It would be a better idea to use one's own vocabulary, okay? As it will help in rephrasing the points in simpler terms. While preparing the second draft, rewrite the first draft to form logical piece of writing. Be concise and eliminate repetition. Okay? Write out the summary neatly without any grammar error of spelling or grammar. ठीक है? आपको अपनी समरी को एक सुटेबल टाइटल भी देना होता है. ओके, तो लेट मी कंटिन्यू विद दिस. 9th पॉइंट क्या है? Give a suitable title to your summary. Okay, title should be in three to five words. Clear? तो आपको 3 to 5 वर्ड्स में टाइटल देना है. इसका मतलब ये नहीं है कि 3 वर्ड से कम नहीं हो सकते.
ओके मतलब it is better 3 to 5. One word title is also sometimes very good. ओके मैक्सिमम 5 वर्ड्स होंगे तो अच्छा है, मतलब मैक्सिमम आप कोशिश ये करो कि टाइटल में मैक्सिमम 5 वर्ड्स हो, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। One word title is also good if it explains what is the idea of the passage. अभी मैंने बोला कि summary should be a piece of continuous writing, तो आप उसमें क्या यूज करोगे आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए? लिंकर्स, कनेक्टर्स, लिंकिंग डिवाइसेज। ओके to connect the ideas. Okay. Linking devices. ठीक है ना, तो आप लिंकिंग डिवाइसेज यूज कर सकते हो एंड सच एज, है ना, बोथ, बट, वाइल, बिकॉज, सो, देयरफॉर, ऐसे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये सब चीजें जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए ये अपनी नोटबुक में नोट कर लो। Next time I will give you a passage and then we will summarize that passage in the classroom only. So you will learn how to write summary of a passage. ठीक है ना? आपको समरी ऑफ द पैसेज लिखना आना चाहिए, तो हम क्लासरूम में उसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल दीज थिंग्स। ओके तो अभी नेक्स्ट टाइम जो पैसेज मैंने गूगल क्लासरूम में भेजा है वो आप पहले से पढ़कर भी रख सकते हो, ठीक है। तो आपको जब मैं करवाऊंगी तो आपको अच्छे से समझेगा कि ये पैसेज किस बारे में है और हम इसमें इसकी समरी हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2-3 पैसेज दिए हैं इसमें, ये देखो, एक्सरसाइज के लिए भी दिए हैं, 2 एक्सरसाइज के पैसेज दिए हैं और 2 सॉल्व किए हुए पैसेज दिए हैं, ठीक है। So you will come to know how to write a summary. Okay. ठीक है. Now I am ending the lecture.